नमस्ते, मैं पराग घारपुरे आपका धनानुभव सीरीज में स्वागत करता हूं। ये धनानुभव सीरीज क्या है? ये जो धनानुभव सीरीज है, यह आपको हमारे जो सब अतिथिगण होते हैं, उनका ज्ञान और अनुभव आपको उनके ज्ञान और अनुभव से कुछ मोती चुनकर आपके आगे के पूरे जीवन में, जीवन काल में कुछ बदलाव लाने के लिए मदद करती है। सारे जो युवा है या जो अभी व्यवसाय कर रहे हैं, उन सब के लिए ये एक बढ़िया मौका है कि ये ऐसे जो इंटरव्यूज है उसे सुनिए और तराशे कि ये लोगों ने अपना प्रोग्रेस कैसे किया, हाउ दे गॉन अहेड इन देयर लाइफ, हाउ दे फाइटेड एंड मेड देयर जर्नी। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी टैगलाइन है। टैगलाइन क्या कहती है? ज्ञान और अनुभव। उसकी जो शिदोरी है, शिदोरी मतलब अ बैग फुल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ब्रॉट एट योर होम, at your doorsteps. The doorsteps we have going to bring an experience and knowledge of Mr. Paras, who has gone through a different part of his life, and from his life we will going to learn a lot of different experiences, knowledges, and he's going to share us a lot of things and tremendous things which we don't know about him, his career, his growth, and the part of his life which is very unknown to all my people from India as well as Indonesia. I welcome all of you once again from the Dharpur Academy as well as Cyber Sanskar. Dharpur Academy is an soft scale and commerce IT as well as uh, ICSE and competitive exams class, ISO it, as well as Cyber Sanskar is into teaching and training of ethical hacking as well as cyber security. So let's go ahead. We have a today's guest from an international background. Is not he is basically his roots are in India, but now he's settled in Indonesia. A lot of Indonesian people are also going to join this beautiful interview because they are also interested to know about the background of Mr. Paras Zaveri because they are very much attached to him. All Indians, non-Indians, Indonesians, all people are they love Mr. Paras very well, and because of this interview will go mixed language, that is English as well as Hindi. So let us begin the journey of Mr. Paras, and I'm going to ask to every question in English as well as Hindi, so all the viewers will understand how it is going. तो मैं सारे श्रोतागणों को विनंती करता हूं कि वो सुनिए, शांति से सुनिए, बिकॉज हमारा जो इंटरव्यू है वो दो भाषा में चलेगा, हिंदी और इंग्लिश। और यहाँ पे मैं जो सवाल पूछूंगा उसको मैं अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों भाषाओं में पूछूंगा ताकि मैं क्या पूछ रहा हूँ वो सभी को पता चले। तन्मय जी जरा तन्मय देखिए क्या हुआ। ओके, सो आई एम अगेन बैक। अच्छा, सो मेरा पहला बॉम्ब मैं पारस जी के ऊपर फेंक रहा हूँ। द फर्स्ट बॉम्ब इन द इंटरव्यू ऑलवेज falls on the guest. That is very interesting. The first question I want to ask is to Mr. Paras that
what was your born and brought up and journey towards the first job or a start of your career? Will you elaborate little bit? आपका जो बचपन था, आपका एजुकेशन और आपने जहाँ तक करियर चालू किया, उसके बारे में जरा हमारे जो श्रोतागण है उन्हें बताइए. Namaskar, Parag ji. Thank you to calling me on this platform. Very happy to share my experiences. So, going back to India, I did my education back in India in Mumbai. Born, brought up in Mumbai. मैं मुंबई से ही हूँ. मैं मुंबई का ही हूँ. And I did my complete graduation in Mumbai. Graduation के बाद I come from a Gujarati family, a complete business-minded Gujarati family. But somewhere I had a feel कि नहीं कुछ अपना करना है, तो उसके लिए शुरुआत करी कहीं से जॉब करने की. So I started my career working with a company called Hertz Car Rental, which is a part of Auto Riders Group. Mukesh Patel ji, Bhupesh Patel ji के साथ. That's why my career started on how the things going to be. I started learning the car rental. I was never a part of this industry. मेरे लिए graduation के बाद this is what I started doing. I gained experiences. I learned with working. That's what I सीखा हूँ काम करते करते हर एक चीज को एक करके. Next where I keep on growing from there, and I was working with multiple companies in car rental and travel back in India. अब मैंने काफी साल वहाँ काम किया, गेन एक्सपीरियंस किया उसके पीछे, एंड पैरेलली आई डिड माय एमबीए बैक इन बलिंगस, और फिर वहां से मेरी करियर की शुरुआत हुई थी. Oh my God! Means you are not a businessman in the beginning. I was never a businessman in the beginning. I was working and I wanted to learn, I wanted to understand the business more than I start doing business from day one. मैंने कोशिश ये करी कि सीखूं और समझूं कि बिजनेस होता क्या. ऑफ कोर्स गुजरात, हम गुजराती हैं, हमारे तो खून में ही बिजनेस इज ऑलवेज देयर. हम हमेशा बनिया ही है और हमें हमेशा बिजनेस माइंड समझ में आ जाता है. हर चीज बिजनेस के उसी से देखते हैं. लेकिन यस, आई वांटेड टू डू समथिंग ऑन माय ओन. तो किस फील्ड में जाना, किस इंडस्ट्री में जाना, was not very sure. But I always love to travel. I was a marketing guy. So that's what I felt a blend के भी ट्रैवल इंडस्ट्री को लेके कहीं मैं आता हूँ और मेरी मार्केटिंग का जो मुझे शौक है वो अगर एक साथ पूरा हो सकता है तो why not? And that's why I stepped in a travel or a kind of a car rental industry, which is one of the part of the travel industry. एक छोटा सा अंश है ट्रैवल इंडस्ट्री का इतनी बड़ी ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में. So that's why I started the career and I started growing. I work with Hertz, I work with Oryx, I work with FCM, a couple of more companies जहाँ पे हमने कार रेंटल से लेके ट्रैवल तक का मेरी जो जर्नी थी, जो मेरा सफर था, वो शुरू हुआ. And that's where I started growing. A really amazing thing that I was also under impression that you started directly into enter into traveling industry. So it is not so. Oh my God. Not really. Not really. We had worked hard for it. I really worked hard for it. And I really understood first how the things are. So, yeah, that's what I work. And I started working. And that's now I am here. Okay, that's great. That's great. So let's go for the. This is the very interesting thing, Uh, and so when so from the job to job as you go ahead, when you got an idea to start your own something, so you started something own in India or outside India. no. It took me a long time. I had to work here also. It was very work. It was a very. I had a very roller coaster uh, kind of a career. It was kind of sweet and bitter. दोनों पहलू हमने देखे हैं लाइफ के. सो हुआ ये था मेरे साथ कि आई हैड अ कॉमन फ्रेंड ऑफ माइंड जो यहाँ पर इंडिया में था मेरे साथ मुंबई में. तो उसने एक दिन अचानक फोन किया, बोला पारस इंडोनेशिया में अपॉर्चुनिटी है, तुम आना चाहोगे ट्रैवल के बैकग्राउंड से. एंड फॉर मी इंडोनेशिया एट दैट टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 years बैक, तो हमारे लिए इंडोनेशिया खाली बाली छोड़ के भी कुछ नहीं था. मतलब बाली भी वाज नॉट एवर पार्ट ऑफ इंडोनेशिया. तो मैं एक जावा और सुमात्रा छोड़ के इंडोनेशिया में कुछ नहीं पता था. एंड जब मैंने थोड़ा होमवर्क करा, बोला यार मैं तो इट वाज वेरी काइंड ऑफ इस्लामिक कंट्री है, पता नहीं कैसा होगा, दैट टिपिकल माइंडसेट. तो फिर दैट्स वेयर माय बेटर हाफ राखी स्टेप्ड इन एंड सेड नहीं,
ये तू कोशिश करेगा, तू जाएगा इसके लिए। और बिलीव मी, मेरा पासपोर्ट भी नहीं था। I never, I never had a passport also. But I was very much settled in my career. I was growing, phase wise, and it was fine. So I was happy there. मैंने नहीं, ये कोशिश करके देखते हैं. So that's where Indonesia came in. So I flew back to Indonesia. आ गया यहाँ पर. Wow, यहाँ पे everything is very different than India. First, the language barrier. They hardly, a lot of people don't speak English here. So हमें वो सीखना था. So that's where the whole ride started. Okay, now I am here. मैं कोई क्वेश्चन, मैं कंफर्ट जोन से बाहर आके यहाँ आ गया हूँ जहाँ पे मुझे जीरो से शुरू करना है. There is nothing in my hand. Of course एक जॉब है, वो करियर के लिए मेरा एक ब्रेक है, उससे मुझे आगे बढ़ना है. अब कैसे करेंगे? So that's where I came in, and yeah, that's why the career started here. शुरुआत मेरी ऐसी हुई थी यहाँ पे. इंडोनेशिया इस तरह आया था मैं. It was always a roller coaster. It was not simple straight down. ऑलवेज लोग हमेशा कहते हैं कि लोगों को हमेशा यश दिखता है, सक्सेस इज देयर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ देम, बट दे डोंट Yeah. नो दैट हाउ यू ट्रैवल. Every time people can see the fruits of jackfruit, but how much painful to open a jackfruit is, Yeah. people don't know, and they only Agreed. say, "Oh, this jackfruit is not good or not bad. It's not very tasty." But they don't know how painful it is to open and take out of the. Exactly. So I agree to your point. yes, so और जैसे नारियल को. लोग बोलते हैं ना, दूर से tips, you can see the tip of the mountain. You don't know what is underneath Yes. that, how that mountain has come up all the way. तो yes, बहुत सारी मेहनत की यहाँ पर भी आके. When I came in, I first think the challenge was the language. So I had to pick up the language. So I started working here. I was working for a travel company which is a part of a GSA of. We were a general sales agent of Air India. Air India उस वक्त डायरेक्ट फ्लाइट चलाती थी इंडिया से इंडोनेशिया के बीच. So I joined them and I was looking after the corporate travel. तो यहाँ पे काफी इंडियन कंपनी से जो बेस्ड है. So I target, that was my first point of target. भाई चलो एटलीस्ट इंडियन भाइयों को पूछते हैं, भैया शुरू करते हैं काम साथ में. That's why I started, and I started. I worked for that company for quite some time. I gained the knowledge. I understood the market, and that's where I established. उसके बाद I moved to a company called VFS, which is everybody aware of. VFS जो visa facilitate करती है. I was picked up by them to roll out their thing, and that's where my turning point of my life comes in. That's where I realized कि अभी business कर सकता हूँ. That means you were also working there, not again started business. I was very much working in Indonesia. I was very much working in Indonesia for quite some time. I came in 2008 and I was working till 2016. So I gave my 8 years of working. 8 years. Then I was how you working in went India. into the business in Indonesia? वो जो आपका जो मतलब आपने ये नौकरी जो कर रहे थे 8 साल तक, Yeah. तो वहां से आपका खुद का ये जो इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, ये अचानक बदलाव आया कैसे आपके जीवन में? मतलब ये बस तो बहुत रोचक है सुनना. yeah, so it happened so कि मेरे साथ काफी इंडियन जो सोपरा यहाँ पे है, जो इंडियन फर्टिलिटी यहाँ पे है, was very much in touch with me. काफी इंडियंस, इंडियन एम्बेसी is connected to me because of travel. और यहाँ पे क्या होता है कि हमारे साथ हमारे साथ ये था कि as a language barrier, a lot of Indian had a difficulty to communicate. So they always पारस से बात कर लो, पारस तुम्हारा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व कर देगा. When it comes to travel related services. So then I stepped in visa. So visa VFS में आया था मैं. So VFS gave me an opportunity to start up, roll out their one of the business unit. So that's where I was a business unit head. I was there for 2 years, and that's why I said, भैया अब तो वक्त आ गया है, अभी हम हमें कुछ कर सकते हैं हमारा. And one of my old friend here, who had always supported me back in Indonesia, came up and said, पारस साथ में करना है कुछ. चलो करते. So that's why it started. तो शुरुआत तो की थी हमने काफी छोटे पैमाने पे. Only 3 people were there, and now we have grown to 13 lakhs 6 years. We have fought COVID, everything.
So when we started this, we started with the core thing which we had first. हमने शुरुआत करी भाई चलो हम ट्रैवल वाला पार्ट करेंगे, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम वो करेंगे. स्लोली रियलाइज किया कि हमें इसके बाहर स्टेप आउट करना पड़ेगा. यू हैव टू इवॉल्व. अगर आप नया कुछ नहीं करोगे, नया कुछ दिशा में नहीं देखोगे, तो आप यहीं रह जाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे. So that's where we started looking beyond tickets, beyond जो core travel था. So we stepped into immigration services, we stepped into visa services. So a lot of things added to our portfolio, and that's where we kept on growing. So this is really very interesting sentence you said. आपने जो कहा है वो बहुत एक जरूरी है हर बिजनेसमैन के लिए कि आपको आपके पैर बढ़ाने होंगे. मतलब ये मेरा बहुत मतलब इंडिया में हमारे यहाँ पे कहा जाता है जनरली इन मराठी फैमिलीज वी ऑलवेज लिसन कि अंथरुण पवन पाय पसरवी. मतलब जितनी पैर चद्दर होगी उतना ही पैर फैलाओ. और मेरा Right. सोच जो सोच है वो उसके उल्टी है. मैं बोलता हूँ ठीक है पैर फैलाओ, लेकिन अगर चद्दर कम पड़ रही है ना तो धीरे धीरे चद्दर को बड़ा करो, पैर सिकुड़ मत लो. तो दिस इज माय माइंडसेट. Agreed. इनफैक्ट यहाँ पर भी ऐसी कहावत है. हाँ, वो खुद को ऐसे सिकुड़ने से क्या होने वाला है? व्हाट इज देयर इन सिकुड़ना? तो खुद को अगर आराम से फैलाना है तो पहले चद्दर बड़ी कर सकते हैं ना हम. चद्दर को चद्दर से जोड़ते हैं. 100%. इनफैक्ट वो सिंधी की एक कहावत है. आई डोंट नो इफ यू नो दैट. सिंधियों की एक कहावत है. Sindhi, because there are a lot of Sindhi based out in Indonesia, a lot of Sindhis. Okay. So जब उनसे मिलता था तो उनसे बात करते बोलते थे, he was just talking, they said, पता है हम क्या बोलते हैं, झूलेलाल खर्चा पड़ा. सर ऐसा क्यों बोलते हो? खर्चा बढ़ने से आमदनी बढ़ेगी, खर्चा नहीं बढ़ा तो आमदनी कहाँ से बढ़ेगी? मैं आमदनी बढ़ाने की कोशिश तब करूंगा जब मेरा खर्चा पड़ेगा. तो दैट्स वी गो बैक सेइंग भैया जो अपने पैर फैलाने चद्दर के साथ भी वी हैव टू थिंक बियॉन्ड. उसके बगैर अगर आप इवॉल्व नहीं करोगे तो आप वहीं पे रह जाओगे, आप आगे नहीं मूव कर पाओगे. एंड विच विल इज नॉट गुड फॉर योरसेल्फ, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर बिजनेस, फॉर एवरीबॉडी, फॉर फैमिली. सो दैट इज वेयर ऑलवेज आई से कि इवॉल्व करना बहुत जरूरी है. Like always my trainer Siddharth Rajsekhar always say start, plan, do, act, and take small steps. Do imperfect action. Now Exactly. this is my fifth interview, and every Wow. time, every day, I learn something. Agreed. So every imperfect 100%. action teaches me something, and now I reach directly to an international person, an international personality directly in fifth interview. So I will say this is every imperfect action takes me the perfect action towards. So one Exactly. step ahead takes it, and now my followers are increasing, listeners are increasing, and day by day I am reaching to the every new person. Whenever I reach, I contact, my communication skills and all things develops, and my Agreed. reach, my bondings are really wonderful to with the person. 100%. So this 100%. is 100%. really good, I will say. So 100%. people For me, say, no, oh, मैं आपको एक आई कैन गिव एन एग्जांपल बिहाइंड दैट. जब हम इंडिया में थे, जब मैं मुंबई में था, हमारे लिए चेन्नई, मद्रासी, सारे जो भी साउथ में सब मद्रासी हो जाते थे. बट व्हेन आई केम हियर, हमारे लिए साउथ के सब सारे मद्रासी है, हमारे लिए कोई मलयाली को अलग नहीं होता है. व्हेन आई केम हियर इन इंडोनेशिया, दैट्स आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इवन इंडियन कल्चर. हम जितना यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं इंडियन कल्चर को, शायद मैं इंडिया में भी नहीं करता. Not only our festivals, everything. So we from Ganesh Chaturthi से लेके हम ओनम तक भी हम सेलिब्रेट यहाँ करते हैं. And I've been part of all this. हाँ सर, हम लोग गणेश चतुर्थी भी करते हैं, ओनम भी करते हैं, उतने ही बड़े करते हैं. So we do all that. So that's why I started learning the culture of not only Indonesia but even India. Back which मैं जो वहां पे जो था, मैं भी had very limited festivals जो हम करते थे, दिवाली, गणेश चतुर्थी and all that, होली हमारी जो थी. But yeah, it was beyond that for me. So I was, as you were saying, once you start meeting people, you learn a lot of things. You never stop learning. मैं हमेशा बोलता हूँ, you can never stop learning. You should keep learning, because every person has something where you can learn.
एवरीबडी, एक कोई ना कोई ऐसा कोई नहीं जिसके पास कुछ सीखने के लिए, सबके पास सब कुछ सीखने के लिए। आपकी दृष्टि, आपकी सोच उस तरह की होनी चाहिए कि आप देख सही देखो, गलत मत देखो। गलत तो सब में होता है, देखना सही है, सही को परखना है, सही को परखो, वेरी सही को ट्रू, परख। वेरी ट्रू। सही को परखो, और ये जो परख है आपकी, वही आपको बड़ा बना देती है एक दिन। 100% उसी को करना है आपको। आप अगर अगर आप नेगेटिव देखोगे तो आप पॉजिटिव कभी नहीं देख पाओगे। आपको बोतल उस दिशा आधी है में, कि बोतल खाली है? हाँ, आपको उसी आधी दिशा में भरी है, आधी खाली है, पानी उतना ही होता है। हाँ, आप सोच आपके ऊपर है, आपको किस तरह से सोचना है। इट्स ऑल अबाउट यू, व्हाट यू थिंक है, सिंपल। अगर मैं वही सोचता हूँ, जब मैं यहाँ पर आया था, लैंग्वेज बैरियर था, बट इफ आई हैड नॉट फाइट इट, आई हैव नॉट थॉट कि नहीं यार ये भी कुछ है, सीखने जैसा है, बिकॉज इट वाज वेरी टफ। यहाँ पे लोग जैसे भाषा में, इंग्लिश में बात ही नहीं करते। सो बाय नो हैव नो चांस, हमें लर्न करना ही, एंड दैट्स व्हाई गॉट मी, अरे यार अच्छा है ना, आई विल लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, So आई you लर्न अ speak, फॉरेन, आई स्पीक, you रीड एंड speak राइट, Indonesian आई स्पीक, language. रीड एंड What राइट। is the language? What is the name of the It is called language? as Indonesia Bahasa. Bhasha. Okay. Bahasa. It's a, yeah. Bhasha is a complete root of Sanskrit. I'm curious. I want you the language. I will listen the language. Come on. Please give us the example. Salamat, salamat pagi semua. Saya Paras. Dan saya अच्छा, terima kasih Pak Parat buat interview hari ini sama Bapak nih. So what I said was, what I said was, good morning everybody. My name is Paras, and I thank Mr. Parag for today's interview. oh my God. So if I have to say thank you, आप आए तो आप क्या बोलोगे उसको? Terima kasih. अच्छा, जैसे तरीमा हम बोलते हैं काशी. तेरी माँ काशी गई, तो तेरी माँ काशी। तरीमा काशी पारस. तेरी माँ काशी, so that's how it is. So तरीमा. yeah, Oh my God. You yeah, taught so me I love, a yeah, foreign language. yeah, I can read, speak, and I can read, speak, and write. But Oh this my language God. is very much has a strong root of India. So it is from Sanskrit and Arabic. So Okay. खुर्सी, Makes ये भी sense. खुर्सी बोलते हैं, हम भी खुर्सी बोलते हैं। अच्छा. ये टेबल को मेजा बोलते हैं, हम भी टेबल को मेजा बोलते हैं। ओके, मतलब उसमें थोड़ा लेकिन एक उर्दू का प्रॉब्लम है, अंश है. हाँ, एक प्रॉब्लम है, हम सुसु को कुछ और बोलते हैं या सुसु को दूध बोलते हैं। अच्छा. ओके. So that's how it is. So yeah, that's what my journey is. So today I'm established here. We are doing a lot of verticals here. So we have a corporate team which looks after tickets for a lot of corporates based here. हमारा पूरा clientele maximum is 80% of Indian corporates from India. So Adani, Asian Paints, and all those are my clientele back in here because they have a very big setup here. So वो मेरे clientele है. We look after their immigration services. So उनके family, उनके work, उनके employees को आना जाना, the stay permit, work permit, we look after. We also do visas across the world. So a lot of verticals we opened up. I represent Spain Visa Application Center for Indonesia. There's one more ओके. vertical. So we have been outsourced by Spain Embassy to look after complete Spanish visa, Schengen visa from Indonesia for anybody who flies out to that country. Oh my God. Congratulations. This is really amazing. Thank you. So that's what we've been. This is what I learned. I stepped in. I kept on evolving, and always kept my. और बोलते हैं ना, अपनी चारे दिशाओं खुला रखना चाहिए. You never know when the opportunities come and knock your door. कब कौन सा कब आएगा आपके दरवाजे पे, और वो मौका आपको ग्रैब करना है. It's up to you how you want to take it. So वही opportunity The door. उसको, And you keep the door open, so nobody need to knock at all. Just yeah, अंदर yeah. आ जाओ. अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ. We Yes. keep it open. We keep it open. We always had that thing कि नहीं, any opportunities which come in, there has something with there. Of course, we do their mathematics and economics on it कि किस तरह होगा अपने लिए. Well, But that is yes, very. opportunities was always open and always there. भैया कभी भी, आज भी अगर कोई opportunities है, we are always open and look forward. So we look to expand today. अभी हमारा next phase चल रहा है कि हम expansion के बारे में सोच रहे हैं कि we need to step out of Indonesia now. So we next क्या हो सकता है? So That is you what. are having like there is a symbol of Air India, that is that Maharaja is standing, that Sevak is standing Yeah, in the, as a closing their hand. So you are also having that. I'm always Yeah. that.
I'm always example there. image there in on their door, so people can just come inside and take your services. Wow, wow. 100%. There, That anybody can walk in anytime, and we are always there to help anybody out here. And it was never related to only business. We go beyond business, especially me. मेरी टीम को भी पता है कि it is not only people calling me for ये काम है पर help करेगा. Anything, any new Indian who comes in Indonesia और कहीं ना कहीं से अगर मेरे से वो अप्रोच करता है, कहीं से मेरी मुलाकात हो जाती है, तो कुछ भी पूछे, समथिंग हाउ टू बी इन इंडोनेशिया का काफी डिफरेंट एटमोसफियर एनवायरनमेंट है यहाँ का. सो वी ऑलवेज देयर टू हेल्प देम आउट. मतलब मेरा मेरी भाभी है, उनके जो हाँ ब्रदर है, मतलब उनके भाई साहब के दोस्त, मतलब एकदम हाँ. स्कूल फ्रेंड, तो वो ओके. जब आए थे हमारे कौस्तुभ जी, हाँ हाँ. तो कौस्तुभ जी. ओके. कौस्तुभ जी आपके आपके अच्छे दोस्त है वो। तो राइट राइट, जब आई आए एग्री. थे, तो उन्होंने मुझे पूछा था यही सवाल कि क्या आप पारस जी को जानते हो? मैंने बोला कौन पारस जी? तो इंडियन नेशन में है। तो फिर जब जिक्र आया तो मैंने बोला हाँ, मेरी एक फ्रेंड है और वो वहाँ पे रहती है, मैंने उनके लड़की को पढ़ाया है। तो बोले हाँ, वही तो है। मतलब आई वाज नॉट अवेयर योर नेम, फर्स्ट नेम, एंड आई वाज नॉट एग्री. अवेयर योर लास्ट नेम आल्सो. So when he talked about you and your surname, man, I don't know any person like that, because I was not ever know your daughter's surname. यस, I आई know एग्री. her name only. So यस यस. when he told me her name, I said yes, I taught her. So he told, and there is another guy, there is a Mr. Patankar. I taught her also. We have taught her also. So he said, yes, राइट. you know her also. Oh my God! And then he knew. Then I know this is his father. Her father's name is Paras Zaveri. Okay, and then स्मॉल this वर्ल्ड. was the decision. So that I remember very clearly. And that is very interesting thing, that I ओके. know a person without knowing him. And I said, a very fantastic review about you. And he ओह, told that he is थैंक यू. the god of traveling. अरे Whenever we meet नहीं. at any time, we directly call. We don't see the time also. And he picks up the phone. He picks up the phone, and, and if by mistake he is not available, we call his wife. And she is the Agreed. only lady is available all the time. Yeah. And then I So, told so him, he's it my was friend. all He's only my friend agreed. from school. Oh, very good. That's nice. That's nice. Very That good. is really Small world. interesting. Very small world. Very small world. Very small world. Very small. So Yeah, yeah. yes, that's no, that's what it is. So our approach for work was always customer oriented. It was we always ना जैसे क्या बोलते हैं, कस्टमर हमारा भगवान होता है, ग्राहक हमारा भगवान है. That's what was always an approach. We were always there to help them out, even without no monetary or no economics commercial interest कि भैया इससे करूंगा तो फायदा नहीं. We were always there to help them out in any given point of choice. मैंने तो काफी चीजें देखी हैं. मतलब I had also moved human remains from Indonesia to India. I had a situation. I had a situation where so an Indian person had died very accidentally, and I had to move his human remains back to India to his family, which we have done it. So it was always there. It was never there a business part of it. So we do all that. We always keep that. It was more towards what do you say? Towards that community, towards that business. के नहीं ये खाली उस level का business नहीं करना commercialize. It is more towards the service we want to give them and make them Service realize. to humanity. Call it as a service to humanity. Yeah, it's Service a to more of humanity is service. the best work of life. Yeah, it is that. It was never Definitely, definitely. कितने लोग कहीं And चीजें करा. I will definitely say, Sorry. because this small thing when you do, automatically people get connected to you somewhere by heart. And this small thing what you do, automatically that brought a big business to you indirectly, Yeah. which you don't know what is coming because of that. So it Because was मैं हमेशा मेरा one of the person coming to me, he told me हाँ. that अच्छा. he he talked to the person is visited to Akola, his main city in Okay. Maharashtra, and Okay.
he just took the responsibility when he was coming for the program. He just he just attended him from station to program and programs to station. But when he went to some big industry, he suggested his name as a software designer and website designer, and he got a big contract. So Oh, what he very did nice. only to just attend a person from station to program, program to station, and See, he got connected to him. So this is the what a opportunity is service always there. he took a big reward because of this. एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं फ्रॉम डे वन मेरा अप्रोच यही था मैंने कभी भी आई ऑलवेज से एज अ सेल्स और मार्केटिंग आई एम वेरी कोर सेल्स मार्केटिंग गाय वेरी कोर सो मेरा हमेशा ये था कि मैं कभी भी प्रोडक्ट सर्विस को नहीं बेचता था इट वाज नॉट लिमिटेड टू दैट बैक इन इंडिया आल्सो इट वाज बियॉन्ड माय सर्विस एंड प्रोडक्ट इट वाज मी आई वाज सेलिंग माय सेल्फ पीपल will look at me. It was not the product and service which I was always selling. नहीं कभी नहीं. It was always me. मैं अपने आप को बेचता. मैं बोलता ना that's the core thing of sales or marketing person should have. It was never should be restricted to भैया मेरी ये सर्विस है मेरे प्रोडक्ट है उसके ऊपर मुझे कुछ करना नहीं नहीं. It has to be beyond that. If you want to grow in life, that has to be beyond something. बाकी तो कोई भी कर सकता है. कोई बड़ी बात नहीं है मार्केटिंग करना सेल्स करना. जिसको बोलने आता है सब कुछ कर सकता है. इम्पोर्टेंट एस्टैब्लिश करना अपने आप को वो एस्टैब्लिश करने के लिए आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है वॉट एवर फील्ड यू आर इन बट वॉट एवर इंडस्ट्री यू वांट टू गेट इनटू you need to be stepping a step ahead you have to be beyond what you do something which is not into your portfolio or not into your thing that will help you two things एक आप सीखोगे दूसरा आप अपना एक प्रेजेंस बनाओगे And when you people remember you, they do something beyond for you. anytime anytime Because 100%. when you do difficult things, small and easy things easily happen for they know that when this person is doing difficult things, you can do any Tom, Dick, and Harry easy things for them without any problem. And No, they know when this he is has done this thing, then I should go for just a small thing without any problem. You get the place in their heart and a guarantee. You I give them agree. guarantee. I can vouch for it. In fact, I have an example to you for that. जब मैं यहाँ आया था 2008-9 में, my company was setting up the corporate travel. So उन्होंने बोला पारस ये सारे कॉर्पोरेट से जाके मिलो हमारे पुराने कस्टमर मैंने ठीक है चलो जाके आते हैं आदित्य बिरला ग्रुप के एक कमर्शियल हेड यहाँ पे थे तो उनको जाके मैं मिला मिस्टर मनलॉय जी उनको जाके मैं मिला और काफी टाइम से यहाँ पे थे वो काफी समय से यहाँ पे थे 35 I think I missed something. 35 years. Sorry, am I there? Sorry. 35 Yeah, years he was here. He was here. So उनको मिला जाके मैं तो मैंने बोला सर शुरू करो सर काम हमारे साथ बोला नहीं यार पारस ऐसा नहीं होता बोला ठीक है सर आप बताओ कैसे करना है आई विल बी द वे यू वांटेड यू टेल मी हाउ यू वांट आई विल गिव इट टू यू आई विल डिलीवर टू यू दैट्स माय कमिटमेंट टू यू so that's where we got connected business started but it went beyond business we became more of a friend a family friend and that's when उसका जब बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया he came to me saying पारस जो बिजनेस की जो बात अभी आई जो मैं 2016 में his son was back doing his graduation back from Australia saying पारस मेरा बेटा आ गया है कुछ करना है उसके साथ क्या बोलता है साथ में कुछ शुरू करें and that's where his son Rohit is with me till date and we started a company which is now we have been successful we are working hard when you look back to our time we said yes मेहनत करी है and we have got through it so that's where Rohit also was a great support to me वो आया हमने से सीखा he was zero about travel but yes करेंगे साथ में चलो कुछ करते हैं तो yeah we started doing things together and that's where that's what I'm saying जब बोलते हो ना जो छोटी छोटी चीजें होती है वो ऐसी ही होती है that things keeps on coming what do you say this adds you अगर आप कुछ किसी के लिए करते हो कहीं ना कहीं is going to come back to you for good बड़ा बन के आता है. It becomes a big thing for you. 100% and never expected out of the blue this person came back saying पारस यार कुछ करते हैं साथ में चला जाओ and I always there when I was looking and it was more of his business जो मैं संभाल रहा था ट्रैवल का ऐसा नहीं यार पारस साथ में करते चलो that as you said right वो वापस आता है and it comes for good अच्छी नियत से करो तो अच्छी नियत से ही वापस आएगा
हाँ, और बुरी नीयत से करो तो बुरा ही होने वाला है। एंड इट इज बाद में ऊपर वाला ट्रू। मालिक। तो ऊपर वाला है कि तो बैठा ही है ना, वो देखता है ना। तो मेरा ऊपर तो वाला। खुद का मानना यही है कि आप ना पाप लेके जाते हो ना पुण्य लेके जाते हो। कुछ लोग कहते हैं पाप यहीं पे खत्म करना है, तो वो राइट। अकाउंटेबिलिटी बैठी है ना अपने यहाँ पे। राइट। एंड इट इज अकाउंटेबिलिटी। तो इसके लिए कुछ देयर लोगों का इज। आपने देखा होगा, भला होता ही रहता है हर बार, बिकॉज वो दोनों हाथ से अच्छा ही करते रहते हैं और उनका अच्छा ही होता रहता है। सर, यू डू आई इट, विल से यू वन विल थिंग, गेट इट। हार्ड वर्कर ऑलवेज पेज, हार्ड वर्क पेज। आप मेहनत करो, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। मतलब आई वाज नेवर अ ट्रैवल गाय, आई हैड नो डेफिनेटली। आइडिया। मुझे तो ज्योग्राफी मेरी ऑफ कोर्स स्कूल में अच्छी थी, लेकिन उसके बाद कोड, लैंग्वेज, एयरलाइंस के बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन थी, जीरो। आई हैव लर्नड इट ऑन द साइड, आई हैव वर्कड एंड आई हैव लर्नड। तन्मय जी, बाहेर गेलोय, बाहेर गेलो. त्यांचा प्रोग्रेस केलेला आहे. जब वो प्रोग्रेस कर रहे थे तो उन्होंने अभी आप हमारे सामने बहुत सारी बातें रखी है, और ये जो हो जर्नी है उनकी, हम आगे लेकर जाएंगे। और आपको हम बताते रहेंगे कि किस तरह से उन्होंने आगे का भी जर्नी किया हुआ है। मैं सर से विनती करूंगा कि वो जल्द वापस आए। शायद उनका कोई नेट का प्रॉब्लम आया हुआ है, लेकिन जल्दी ही वापस आएंगे। हाँ, उसको बोल तो मैं इसमें आ नहीं रहा हूँ। ये कौन है 157? अरे उसका ही कोई होगा, हम लोग नंबर पे। हाँ मैं, अरे पता नहीं कॉल आ रहा है ना, तेरे को ही आ रहा है सारा। And listenable also. Okay, great, fantastic. Now I'm available, right? Sorry, Paragji, I'm not able to hear you actually. Sorry. I'm sorry. I'm not able to hear you.
I'm not able to hear you. पराग जी आवाज ऐकू येत नाहीये. आवाज आवाज गेलाय तुमचा. तुम्ही लॉग आउट होऊन परत करा ना, जॉईन करा ना परत. Ha. So now I'm back. Some technical issues from both. Now I'm. Yes, yes, I can hear you. Yeah. So I can technical hear issues you. do happen. So sorry for the interruption, all my guests. I again Uh, welcome you all and Mr. Paras. Yeah. Thank you, sir. Thank So you. we'll continue. What is the difference between? How do you find a difference between the international travels, tours and travels, and local Indian tours and travels? आपको इंडियन इंटरनल इंडियन टूर्स एंड ट्रैवल्स और जो इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स है उसमें आपको ये क्या फर्क दिखाई देता है और आप उसके बारे में और आपका जो अभी आपने जो बिजनेस डेवलप किया है उसी बारे में आप और कुछ श्रोता से कुछ शेयर करना चाहोगे? जी, ऐसा है कि इंटरनेशनल डोमेस्टिक बोथ ऑफ द मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई से ट्रैवल इंडस्ट्री इज ह्यूज. इट्स एन ओशन. एक बहुत बड़ा समंदर है. यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जहाँ पे आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हो. ट्रैवल इज कंसर्न काफी है. डोमेस्टिक ट्रैवल ले लें, कॉर्पोरेट ट्रैवल ले लें, इंटरनेशनल ट्रैवल ले लें, वीजाज ले लें, काफी चीजें इसके अंदर है. इट इज ऑल अबाउट वेयर यू कैन एक्सपर्टाइज योर सेल्फ ऑन दी अपॉर्चुनिटी वॉट यू आर एंड दी एनवायरमेंट इज कंसर्न. जहां पर आप एस्टेब्लिश हो, जहां पर आप बैठे हो, वहां से आपको किस किस दिशा में आपको ले जाना आप जा सकते हैं, विच विल बी काइंड ऑफ हेल्प टू ग्रो टू योर करंट बिजनेस. तो जैसे कि जब इंडिया में थे तो हमारा रिस्ट्रिक्टेड था, भाई हम कॉर्पोरेट ट्रैवल ही करते थे, हम कल टिकट्स करते थे, वॉल्यूम्स वैसा था, तो अलग चीजें थी. यहाँ पे जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ का मार्केट पूरा अलग है. इट्स वेरी डिफरेंट. यहाँ पे इंडिया की तरह हिसाब किताब नहीं है. यहाँ पे लोग ऑनलाइन जाके चेक कर लेते हैं. यहाँ पे हमारे साथ कंपटीशन में काफी लोकल एजेंसीज भी हैं विच आर एस्टैब्लिश. सो हमें तो उसी के अंदर से बाहर निकलना था. वी वर वन ऑफ देम. तो कैसे करेंगे, वेट विल स्टेप इन. सो वे भी ओके. सो फर्स्ट थिंग विच वाज वी हैड वाज भी हमारा इंडियन डिसऑफर, जो हमारे इंडियन भाई लोग हैं. दैट्स वाज द फर्स्ट प्लेस टू अप्रोच. लैंग्वेज बैरियर था, हमें सीखना था. तो यस, वी स्टेप्ड इन. हमने इंडियन से बात करी, भाई चलो हमको शुरू करो. वी स्पोक टू इंडियन एम्बेसी, सपोर्ट अस ऑन दैट, एंड दैट्स व्हेयर वी गॉट द किक. वी गॉट अ ब्रेकआउट. वी चला, support started coming in. But then when the travel is concerned with, when it comes to Indonesia and India में, तो यहाँ पे मल्टीलैंग्वेज मल्टीकल्चर लोग हैं. जैसे इंडिया में भी हम ट्रैवल करते हैं एवरी ईयर, जैसे यहाँ पर भी लोग ट्रैवल करते हैं. बट द रिक्वायरमेंट्स आर क्वाइट डिफरेंट व्हेन द ट्रैवल इज कंसर्न. यहाँ पे बैकपैकर्स भी उतने ही जैसे वहां पर भी हैं, लेकिन यहाँ की जो रिक्वायरमेंट हो जाती है कि व्हाट यू से, पैसा देख फेंको तमाशा देखो. अच्छा, ओके. हाँ, पैसा फेंको तमाशा देखो. सो पीपल आर हियर टू, ओके भैया तू काम करा के दे. सो यू हैव टू बी एक्सपर्ट फॉर इट. यू शुड नो इन एंड आउट व्हाट यू आर डूइंग. तो आपका एक्सपर्टीज्म वहां आ जाता है. आपको जरूरी है वो समझना, क्योंकि अब यहाँ पे और कुछ नहीं, भाई मेरे पास ये है, मैं ये दे रहा हूँ, बाकी तू कर ले जो करना है. अब मुझे मेरा डॉक्यूमेंट बना के दे दे, मुझे मेरा वीजा बना के दे दे, मेरा स्टे परमिट बना के दे दे. We have to manipulate, we have to understand how this thing can be fit in and we can deliver those services. So इंडिया में वैसा थोड़ा अलग है. इंडिया में क्योंकि इट्स अ बिग मार्केट, यहाँ पे हम निश मार्केट में थे बिकॉज इंडिया इज वेरी लिमिटेड हियर. इंडिया में हमारे कंपटीशन है, यहाँ पे हम निश मार्केट में बैठे. सो वी आर ऑलवेज दैट यू नीड टू बी डिलीवरिंग समथिंग निश, यू नीड समथिंग अबाउट, कुछ तो एक स्पेशलाइज आपको होना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी स्टेप्ड इनटू अदर सर्विसेज. So yeah, travel as such, yes, it's yeah, it's a different from place to place. I'll say from country to country, from
place to place. But yeah, that has been. But I enjoy doing this, so I would always love exploring more and beyond the travel was concerned. So yeah, this is how I say travel के बारे में. So as I say, I always say use word that is ikigai. So where the passion and work come together. So that is in Japanese term called is ikigai. So that is your ikigai matches with your tours and travel business. So that is why Yes, you can work continuously without any problem and you get happiness out of it. So whenever you get agreed. happy, your happiness and business comes together, you can work unlimited without any पेन एंड वो जो हम कहते हैं थकान कि उसमें काम करते हुए Exactly. आपको कोई थकान महसूस नहीं होती और वही वही थकान मतलब वो जो उसमें हैप्पीनेस आता है आपको काम करते हुए सेवाएं देते हुए आप उसमें से जब और पैशन वही पैशन में जब आप काम करते हो तो आपका पैसा भी उसमें से वही पैशन से निर्माण होना बहुत आसान हो जाता है 100%. 100%. 100%. अब बोलते हैं ना, follow your passion. फॉलो योर पैशन वेरी ट्रू दैट इज द कांसेप्ट ऑफ इकिगाई और yeah. So मेरे पैशन और मेरे वर्क माय करियर आई गॉट इट टुगेदर. ये पहले था नहीं, इट वाज स्लोली डेवलप व्हेन आई स्टार्टेड मूविंग इनटू ट्रैवल. आई लव ज्योग्राफी, तो उस चक्कर में आई लव प्लेसेस टू सी, आई लव टू एक्सप्लोर कि ये दुनिया में कहाँ क्या 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 है. एंड दैट्स व्हाट इंक्लाइंड मी टू मूव टुवर्ड दिस इन माय करियर. वो पैशन को मैं अपने करियर में लेके आ गया. दैट हाउ इट इज. दैट्स व्हाई इट केम इन. और इकेगाई जो आपकी होती है इकेगाई एक तो मिलना बहुत मुश्किल है समझना व्हाट इज इकेगाई फर्स्ट और एग्जैक्टली, दूसरा एग्जैक्टली. इकेगाई अपने बिजनेस में लाना इज आल्सो वेरी डिफरेंट थिंग वेरी डिफरेंट थिंग एंड आई विल से ये जो आपकी मुस्कान आती है आपके चेहरे पे दैट इज ओनली बिकॉज यू आर वर्किंग इन योर इकेगाई and या I am also taking interview on the Ikigai only. So you are very feeling happy. Yeah, I'm sharing something about my Ikigai, about my या subject, about my knowledge. Yeah, yeah. And whenever That's what it has to be. That has supposed to be. That has to be. The yeah, only thing yeah, which helps is the knowledge and the experience what you have gained all your life. It can be bitter, it can be sweet. ये दोनों हो सकता है, लेकिन experience होता है. उसी से हम सीखते हैं, उसी से हम आगे बढ़ते हैं. sure. And वो हमेशा. whenever people will listen this interview, they will definitely feel that oh my God, this is really wonderful. We should invite Mr. Paras on a stage. We should listen him Thank you offline. so This is not yeah. This online is not giving us happiness. So Thank you. whenever you come back to Mumbai, Look automatically forward. बम्बई में आप आओगे तो लोग पक्का पक्का आपको पकड़ने वाले हैं. I am Yeah, thankful about this yeah. Okay, thank you so because much. as you That is share because of you, Frank ji. That is all because of you. the see, अगर it पकड़ is लेंगे तो not आपको me, पकड़ लूंगा मैं कि it is भैया मुझे not पकड़ me, लिया. it is क्या all करना है? you. It is all about you. It is all because of you, your passion and your greatness that you have kindly said yes. Yeah, and I thank everybody who has been with me, right? My wife You are, Rakhi, my team, that everybody is who was all there I to was support. that is the same question I'm going to ask that all your this longest career आप किसके ऋण में रहना चाहोगे to whom you will feel to stay always connected and say thank for your who stand behind you supported you all the this long career your from birth to this stage to brought you here you have taken a lot of names but that are only the footsteps but as a runa nirdesh what we call it in hindi or marathi कि आप उनके ऋण में रहना चाहोगे जिंदगी भर कि अगर उन लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता आई विल नॉट जी. बी such a big person if they have not supported me pushed me I was not in a condition to take such a big steps because I have not asked you about anything corona and all because that is not a happy because of some our teachers it was really wonderful because who has crossed this line our friend corona who has crossed that period he was really a wonderful person always
So what you have lot of different things to tell other than For Corona. for That Corona, not let me I tell am you. avoiding that point at all. Because again 10 minutes will go. नहीं, कोरोना के लिए I tell you कोरोना के लिए I just a short one I'll tell you कोरोना के लिए when it came in हमारे ये साथ ये चैलेंज था कि अभी करना क्या है ट्रैवल इज हाँ, स्टॉप वी डोंट नो क्या होने वाला है हमारे साथ ठीक correct. है सो वन फाइन डे टेल ओके भैया ये सिचुएशन अभी सही नहीं लग रही है आई कॉल माय टीम ऐसे देखो ये स्टेज है आई डोंट वांट टू रिमूव एनीबॉडी फ्रॉम दिस प्लेस मुझे कोई यहाँ से नहीं आई कीप एवरीबॉडी इंटैक्ट ऑफ कोर्स विल नेगोशिएट ऑन द कमर्शियल साइड बट yes I will make sure that nobody is asked to leave the company and that's what helped me today when we opened all my team was in place they came back we worked together within covid they supported me for that we worked on covid and we bounced back in 2022 believe me we were so strong mentally physically that we were able to deliver more than we did in past years My God. everything was intact we compromised and we made sure we are together. Sir, I cannot hear you. You're mute if not wrong. Sorry. जाते जाते जी सर. I will give you अभी only two questions are left from my side, which I जी. want to ask. So, as your career from the starting of this with Mr. Rohit, as well as and before that, do you have any essay experience? Do you have any experience where you laugh or feel very happy, and where you cannot control your happiness, or no, no, it is not happiness, but it is really what we call it as. People make silly mistakes or they ask such a question foolish questions that you cannot control and you are standing there as a colleague or a senior they are talking to you and they are talking in such a manner that you yourself cannot control the laughter but again you cannot laugh because you are on a opposite side of the counter and sometimes you are sitting inside in the cabin people come and they ask such a question and you inside laughing that oh my god how my person is facing the person and he cannot how can he manage such customers so any such incidences can you share without taking any names because that is also very wonderful things of life. नहीं नहीं अच्छा basically I had a lot of good experiences and bad experiences and देखो I always believe कि मनुष्य has बोलते हैं ना कि सबका एक अपना सोचने का तरीका होता है and they are not wrong they are not right they are everybody I will say सब अपनी दिशाओं में सही और है काफी एक्सपीरियंस हुआ है कि लोग आके मुझे बोलते हैं पारस को जानते हो क्या बोला मैं परसों जानता हूँ बताओ क्या सेवा कर रही है उनके कुछ बात करानी तो हम करा देते उनके साथ तो Too काफी good, सब too चीजें good. हुआ है काफी एयरपोर्ट पे हुआ है बिलीव मी सिंगापुर एयरपोर्ट पे हुआ है मेरे साथ अच्छा अच्छा आप कहाँ से इंडोनेशिया से क्या परस को जानते हो मतलब, हाँ बताएं आई नो हिम हाँ मतलब जानते हैं काफी हाँ मैं उनका फ्रेंड हूँ मतलब सर आपका नाम बताएंगे आप बोले मेरा नाम अवनीश है वेरी नाइस सर मैं ही पारस हूँ अरे आप ही पारस हो मैं पता नहीं था आप ही पारस हो ले अरे ये कैसी बात हो दैट हैज बीन लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस आई हैव गॉट लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स लाइक दिस या सो I had a very funny this thing मतलब काफी जगह पे काफी ऐसी स्टोरीज मेरे पास हैं and of course yes too short time for me right now to share all of them but yes तो हाँ so काफी I have a lot of such experiences ऐसे हुए मेरे ऑफिस में भी होता है काफी दिस इज रियली ग्रेट कि लोगों ने आपको ही पूछा है डू यू नो मिस्टर पारस हाँ हाँ काफी जगह पे हुआ है काफी जगह पे वैसा हुआ है ये चीज कि आप अच्छा आप पारस को जानते हो हम जानते हैं आप बताएं हम क्या सेवा करें आपके लिए हम बात कर देते हैं उनके साथ तो बोले ऐसा काम है ठीक है फिर मेरे से बात कर लो आप मतलब मैं पारस ही हूँ आपसे ही लोगों ने आपका कांटेक्ट मांग लिया पता मांग लिया ऑफिस का पता मांग लिया डिटेल्स मांग लिए एंड यू आर गिविंग देम अरे यार आ जाओ आके मिल लो फिर बात करते हैं कैसे करते yeah so the lot of things मतलब काफी जगह पे क्या होता है कि lot of people are in connect with me on WhatsApp and thing so they do not met her
फेस टू फेस। तो काफी इवेंट्स में जब जाते हैं हम लोग, इंडियन एम्बेसी के इवेंट्स में या कोई गैदरिंग में, सो कहीं ना कहीं बात हाँ, होती है। एंड ट्रैवल इज ऑलवेज अ कॉमन सब्जेक्ट हमारे लिए यहाँ पर, क्योंकि करेक्ट, हम आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं। तो भैया कोई नई एयरलाइन शुरू होने वाली है क्या, हम इंडिया कैसे जल्दी जा सकते हैं, हमें क्या बैकअप रखना चाहिए हमारे पास, सारी क्राइसिस की बातें उस समय होती है कि भी क्या करना चाहिए। तो आई एम ऑलवेज दैट थिंग। तो काफी जगह बोलते, अरे पारस से बात करो ना। अब कोई और, मतलब हम 3-4 लोग खड़े हैं, तो उसमें से एक बंदा ए इज आस्किंग टू बी, अरे ये प्रॉब्लम था, तूने पारस से क्यों बात नहीं की? तो वो बोले, अरे भाई पारस ये तो रहा खड़ा सामने तेरे, क्या बात कर रहा है, तो किससे बात कर रहे हो, उसी तो बात कर रहा है। तो होता है। सो बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल ऑन, किसी ने जब व्हाट्सएप पे कहीं पे हम होते हैं, तो कभी काफी टाइम में पिक्चर पे फोकस नहीं करते हैं, डिस्प्ले पिक्चर पे, या किसी का कुछ और होता है, तो काफी हम मिलते नहीं है। तो अरे हाँ ये अच्छा, ये आप थे, अच्छा ठीक है, सॉरी। तो दैट्स हाउ इट इज। वैसा होता है, काफी समय हो चुका है। इनफैक्ट मैं, राखी भी बोलती है कि पारस, मुझे आई एम सॉरी मैम, दिस इंडस्ट्री, बट मैं कभी कभी नाम भूल जाता हूँ। तो काफी जगह पे इवेंट पे आते हैं, तो कितने लोग, अरे पारस जी कैसे हैं, पारस जी कैसे हैं, सर आई एम फाइन, हाउ आर यू सर। एंड बिलीव मी, आई ऑलवेज से सर हेलो, बिकॉज मैं नाम भूल जाता हूँ। सो इट ओके, बिकम्स अ वेरी काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी। बाद में राखी पूछती है मुझे, कौन था? बोला, हाँ यार इसकी कंपनी का नाम मुझे पता है, इसका पता है, सब प्रॉब्लम क्या था, लेकिन इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है। तो आधे अराउंड मेरे साथ ये सिचुएशन होती है। आई सेड वी आर ह्यूमंस, एंड ड्यू टू दिस वेरी टेक्नोलॉजी हम हमारी जो स्पेशल इंद्रियां जो उसको भूलना शुरू कर दिया, वी नॉट यूजिंग देम राइट वे। यस, दैट वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बिकॉज़ हम लोग डायरेक्टली मोबाइल में सेव कर देते हैं, सो वी डोंट रिमेंबर द नेम्स, नंबर तो भूल ही जाओ। भूल ही यू नो, जाओ। इफ यू रिमेंबर इन बॉम्बे, बम्बई में तो पहले 8 डिजिट के नंबर आते थे, मतलब एक एग्जैक्टली, डिजिट नंबर प्लस 022, सो दैट बिकम्स एग्जैक्टली, 11। So we यस, used to remember 11 digit numbers, यस, एग्जैक्टली। and now और एक mobile नहीं, number are काफी, only 10 digits, but we don't remember काफी। the 10 digit. काफी सर आप काफी सारा हो गया। बिलीव मी, हम हमारा नंबर याद नहीं रखते, हमें खुद चेक करना पड़ता है, मेरा नंबर क्या, बता दो करके। कोई पूछ लेना नंबर की, कैन यू हैव कैन हैव योर नंबर प्लीज, तो हमें एक्चुअली दिखाना पड़ता है ओपन करके। वी डोंट इवन रिमेंबर आवर ओन नंबर। तो दैट्स हाउ वी आर। सो Correct, that's true. टेक्नोलॉजी, आज देखो हो रहा है, हाँ टेक्नोलॉजी ने अच्छा भी किया हमारे साथ, हमारे बुरा भी। साथ ये भी कर रहा है। बुरा तो नहीं कहूंगा, तो हमारी है कि वी हैव टू मेक श्योर दैट वी कीप ऑन डूइंग दैट। सो ठीक है, बताएं सर। मतलब अभी तो मैं, when I use Google Assistant, now I have to remember that I have two numbers. So when I say, hey Google, call this person main and is this person mobile, so automatically he calls. So थोड़ा practice एग्री, करना पड़ता है। Whenever I do such things, automatically it calls, and I don't know, I don't need to find person, I don't need to do anything. So because of this, पहले वो फेवरेट वाला ऑप्शन था, अभी ये मेरा वॉइस का चालू हो गया है। तो नाउ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मेरा ये हो गया है कि मैं वो आदमी को ढूंढना भूल रहा हूँ, और गूगल एग्जैक्टली, असिस्टेंट है, विदाउट विदाउट डूइंग एनीथिंग, आई जस्ट कॉलिंग द पर्सन। मतलब पहली पहली बार जब मैं ये कर रहा था, तो वो लोग, कितनी बार कॉल करेगा यार, तो हर बार बोल रहा है मिस्टेक से लग गया, मिस्टेक से लग गया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो अभी ऐसा है ना कि टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग आउट, वी कैन फोकस ऑन कोर थिंग्स, और ये सब सारी चीजें हमने गूगल भाई पे छोड़ दी है। भाई गूगल हेल्प हाँ, कर ले, क्या कर सकता है। कर बढ़िया, लेगा। कर लेगा वो अपने आप पे। And they do it, and it ये do 100%। it. Even open the app, if you open, automatically it does. So it is या very helpful. As well, it is very negative. अग्रीड, 100%, 100%. 100%। So तो we'll जी सर। move ahead. We जी, move ahead. The last question. आप किसके ऋण में रहना चाहोगे? मतलब वेल व्हेन आई से दैट, फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे बोलते हैं ना, हर आदमी के पीछे एक औरत होती है फॉर सक्सेस, देयर इज ऑलवेज अ मैन बिहाइंड, देयर इज अ वुमन बिहाइंड अ मैन फॉर सक्सेस, दैट गोस टू राखी फॉर श्योर। इंडोनेशिया लाने का पूरा श्रेय उसे जाता okay. है। नहीं तो मैं आता ही नहीं यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट बीइंग गेटिंग एस्टैब्लिश्ड, एंड the support what she has gone whenever my roller coaster rides were on, कभी jobs के ऊपर नीचे, कभी business में ऊपर नीचे, COVID, and she was always stand by for me for that. She is the one, the first whom I always kind of give my credit to her. And yeah, there are a few more my friends who have been always there. All I will
list of them, but yes, there are a few very core ones which are always there to me, which have been always stand by. Ra- Rohit hai, Vijay hai, Himanshu. These are few friends who have been always there from the day one I've started my career. I'll, No, because always people love to have some people. They are backbone of your career, your development, your growth. So right, whenever we have that in mind, so but afterwards people say, "Oh my God, I've forgotten to take such names and all." So right, before 2 days, one of my in interview, the guest told me that right, Parag, please add this question because every time we don't get the opportunity right. share the names. So from that day, I added this question at the end that who want to give you the respect, who want to you share your gratitude. So this is a gratitude question. Sir, So it is my gratitude to everybody who has stand by me in my all my rise and fall. My wife, my family, my team, everybody is in there, and I thank everybody who was always there to who will stand by to me for rise and fall. क्योंकि इनके बिना a single man cannot do anything. एक आदमी अपने आप में से कुछ नहीं कर सकता, उसको एक टीम, उसको एक फैमिली जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू मेक श्योर दैट आपके पास वो चीज हो एंड यू होल्ड इट टू इट. अ, ये सवाल के साथ हाँ मैं पराग घारपुरे साइबर संस्कार और घारपुरी एकेडमी की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए थैंक और यू. हमें इतना लंबा टेक्निकल प्रॉब्लम से भरा फिर भी आप जुट जुटे रहे हमारे साथ और हमारे हर सवाल का जवाब दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. I Parag Gharpure thank you from the my bottom of heart that you came here and share your thoughts, experience, knowledge about your career and business, how to do business, how to develop your business, how to expand your business, how many verticals you can have, how to develop the verticals, how to think about growing the Sindhi thoughts. A lot many things you have shared from your inside your mindsets and all, which people generally don't know. True. And from the bottom of heart of South and through because of the support of Cyber Sanskar, I Parag Gharpure once again thank you for coming here and giving such a wonderful information to our guests and the people who will listen afterwards your interview. Thank Thank you. you once Thank you. again. I will like to thank you in Indonesian language. So terima kasih sampai jumpa. So it is thank you till we meet again. Oh, Thank you so much. Thank you. It was great. It thank was you a great once. opportunity, and I'm very happy to be part of this. Thank you so much. Wish you all the best of luck. Thank Thank you you. so much. Thank you Thank so you. thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. अशा प्रकारे आपण आज पारसजी यांना भेटलो, त्यांची मुलाखत ऐकली आणि त्यांचा पूर्ण प्रवास बघितला. हा एक वेगळा अनुभव होता आपल्या सगळ्यांसाठी व तो एक खूप सुंदर असा ज्ञान आणि अनुभव याचा संगम होता. मी सगळ्यांना विनंती करतो की तुम्ही हा पूर्ण इंटरव्ह्यू पुन्हा पुन्हा ऐका, हा अनुभव पुन्हा घ्या, पूर्ण इंटरव्ह्यू ऐका आणि आपला ज्ञान आणि संगम ह्याचा आनंद घ्या. धन्यवाद.
हा परागजी झालंय. बंद कर ना.